सो हेलो एवरीबॉडी, मैं आ गई हूँ फिर से दिमाग खराब करने। वैसे तो कल मैं रो दी थी क्योंकि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर चैट जीपीटी उसकी मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने लेवल के हाई लेवल की चीज़ें मैंने ले ली। मतलब कि अभी मुझे बेसिक चीज़ें पहले समझनी चाहिए, फिर मुझे एडवांस चीज़ों पे मूव करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बेसिक चीज़ें समझती जाऊंगी तो ऐसी चीज़ें थोड़े थोड़े करके सामने आती रहेंगी, जिसकी वजह से जब मैं एडवांस पे अपने आप ही मूव कर जाऊंगी तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सो मैं अभी बेसिक पे हूँ, जिसकी वजह से मेरा हेडेक हो रहा है। तो चैट जीपीटी ने कहा कि आई जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट एंड आस्क क्वेश्चन, आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन, आई जस्ट नीड टू कीप आस्किंग क्वेश्चन, आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। सो मैं वही करूंगी क्योंकि मेरा दिमाग खपा गया है करते करते। एंड ये क्या हो गया मेरे को, ये नो ये क्या हो गया? ये ना इतना हाथ पलक झपकते एकदम पीछे चला जाता है। पलक झपकते ओके, ये क्या करते हैं? ये क्या हो गया? हमारे को समझ में नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आ रही। हिस्ट्री हाँ, मैं भूल जाती हूँ ना कहते कैसे है, कहाँ है ये। So basically I don't need to understand. Triangles out of those vertices. So basically हमने इसमें क्या किया था, हमने नहीं किया था, इसने किया था। तो हमने ये सब चीजें तो हमने स्लॉट बना लिया, वैल्यूज ले ली। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, जस्ट जितना मुझे समझ में आया है कि हमने पहले इसमें ग्रिड्स बनाए हैं, मतलब पॉइंट्स बनाए हैं मैश के, ताकि हम उस चीज को ट्रायंगल में जोड़ सके, मतलब ट्रायंगल को सबसे पहले शेप दे सके। पहले हमने पॉइंट्स बना लिए हैं, अब इसमें ये ट्रायंगल बनाएगा, वो ट्रायंगल से उस चीज को शेप देगा। आई मीन वेट, मैं ग्रिड दिखाती हूँ। ग्रिड ये हुआ। इसमें तो सबसे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स नहीं देख रहा। लेकिन मान लो यहाँ पे पॉइंट्स है और इस चीज का वो ट्रायंगल करेगा, ट्रायंगल में ऐसी चीजों को बनाएगा और उसके बाद ट्रायंगल के बाद वो उस चीज को शेप देगा। तो उसने न्यू मैश बनाया। पॉइंट्स मैश मतलब ही पॉइंट लेने के लिए, वर्टेक्स लेने के लिए। और इसने वर्टेक्स में पहले उसने नंबर्स को डाला और नंबर्स को मतलब कि पहले वर्टेक्स न्यू वेक्टर 3 लिया कि सारे जितने वर्टेक्स के उस सारे वर्टेक्स मतलब कि ढेर सारे वर्टेक्स होंगे, ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, तो उसे पॉइंट्स में सेव कर सके, जिसकी वजह से उसने इसमें एरे लिया और उस पॉइंट्स को उसने नंबर ऑफ रोज से इनटू कर दिया। तो नंबर ऑफ इनटू कर दिया क्योंकि रोज 2 है और 70 पॉइंट्स हैं। तो एक रॉ में 70, दूसरे रॉ में 70। लेकिन डाउट ये कि पता कैसे चलेगा कि एक रॉ में 70 पॉइंट वर्टेक्सेस हैं, तो दूसरे रॉ में कैसे 70 वर्टेक्स बनेंगे? एक मिनट, ये मैंने ना पूछती हूँ। ये तो चलो समझ में आ गया, एक एक करके समझते हैं। आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एक एक लाइन का कोड समझते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नो मैटर मुझे समझ में आया ना आए, आई जस्ट नीड टू आस्क क्वेश्चन एंड लीव एवरीथिंग ऑन माई ब्रेन। तो क्योंकि जो ब्रेन है वो काम करता रहता है, वी जस्ट नीड टू आस्क क्वेश्चंस, उसके बाद ब्रेन अपना तो काम करेगा ही ब्रेन काम। लेट्स डू इट, लेट्स जस्ट आस्क क्वेश्चन। सो डूड, पहले मैं बता दूं फ्रेंड की तरह डीप सीक को कि व्हाट आई एम गोना डू, सो डीप सीक कैन अंडरस्टैंड आवर टास्क। We decided that I don't need to understand everything at once. I will understand little by little, line by line. So see this and explain
what is this saying? Because as we know we have two rows. One is bottom, and second is top, and main is top, where we have to make waves. But as we know, we made array of vector to store all waves position, all array of vertex to store all vertices position. But how 70 vertex will be on top and second on bottom? Can you show me how? I did not get. एक मिनट, यहाँ पे मैंने पहले दे दूं से, यहाँ पे ऐसे देते हैं ना, ऐसे ये वाला लाइन, इस चीज को मैं ऐसे कर देती हूँ. Excellent, you are back and you are thinking line by line. That's the right way. The line, itna one, what it does, create one long list array with total slots 70, मतलब 140 slot. एक array बनता है जिसने हमने यहाँ पे array लिया vertexes के लिए, क्योंकि एक vertex तो है नहीं, ढेर सारे points है, तो उस points को store करने के लिए हमने एक array बनाया जिसमें हमने दो rows लिए हैं, top and bottom, जिसमें हमें waves चाहिए, जिसके लिए हमें points बना रहे हैं. पॉइंट्स बनाया, तो उसमें ये करने के बाद पॉइंट्स बन जाएंगे, जिसमें पहले रॉ में 70 हो गए, दूसरे रॉ में 140 स्लॉट होंगे. लेकिन कैसे? हाउ 70 स्लॉट, 70 top plus 70 bottom fit in one list. The list is numbered from 0 to 139. क्योंकि 0 क्यों लिया? क्योंकि 0 को हम कोड में वैल्यू मानते हैं. 0 को हम लोग मान के चलो 0 से 1 शुरू होता है. तो स्लॉट 069, स्लॉट 069, बॉटम रॉ 70 वर्टेक्स, मतलब बॉटम में 70 वर्टेक्स मतलब 70 पॉइंट्स होंगे, और टॉप में 70 वर्टेक्स होंगे. तब 70 से लेकर इतने तक, इतना तो समझ में आ गया. पर विजुअल इंडेक्स 1 2 3 इतने 69, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने. बॉटम 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 बॉटम, टॉप 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 टॉप, नहीं समझ में आया. बॉटम रॉ, बॉटम 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 बॉटम, यहाँ से शुरू होगा. Why this order? Because the loop puts all bottom vertex first, all bottom vertexes first, y0, then on top of this y1, the 0, y0 मतलब ऊपर का 0, नहीं ऊपर 0 से यहाँ पे फिर 01. How the loop does this? 0 bottom row, when y0 bottom row, x goes 0 to 69, formula x into x plus y 69, just bottom row. नहीं समझ आया. This simple English. The array is like a parking slot with 140 number spots. The array is like a parking lot with 140 number slot इतने रिवर्स फ्रॉम बॉटम का. नहीं समझ में आ रहा. Visual. I am not getting.
See this vertices. Is this you are talking about net 70 points on top and 70 on -5 in bottom. Like this. Here we have triangle, but you have to imagine points there. ये नहीं समझ आ रहा है। टॉप है, टॉप बॉटम मिड। आई नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। नहीं समझ आ रहा। टॉप बॉटम, टॉप पे इतना वर्टेक्स, बॉटम में इतना वर्टेक्स। ओके, ये तो वर्टेक्स हो गया 1 2 3। टॉप वर्टेक्स, टॉप बॉटम वर्टेक्सेस। ये वाला इमेज दे के देखते हैं समझता है क्या। कहाँ गया मिनी बॉक्स? मुझे इतना समय नहीं देना चाहिए, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगी, थोड़ा मोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग लाइट्स बनाएंगे उस पे। अभी कैरेक्टर का, कल मैं कैरेक्टर बनाऊंगी, कैरेक्टर करेंगे, वाटर करेंगे हम लोग कुछ देर, मतलब कुछ देर ऐसे वैसे वाटर किया करेंगे। फिर यू नो एक ही पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि ऐसे हो गया तो हो गया मेरा, मतलब इतना लेट हो जाएगा ना कि दिक्कत हो जाएगी। और मैं एक चीज पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। थोड़ा मोड़ा समझते आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग कुछ और बनाते रहेंगे। यस, एग्जैक्टली लाइक दैट, you got it. If you screenshot each corner of those shapes is a vertex point. These are vertex point here, okay? So screenshot your water has 5 vertex corner, 5 vertex corner, 5 vertex corner तो नहीं दिख रहा है। 1 2 3 1 2 3 4 5। ये vertex किस चीज को बोल रहा है? Square waist pyramid your water has 5 vertex corner। 5 vertex corner कहाँ से दिख रहा है? 1 2 3 4। हाँ यार, ये मैं वर्टेक्स समझ नहीं रही हूँ। वर्टेक्स ये क्या कहते हैं ना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ से 5 हुआ भाई यहाँ पे? वर्टेक्स 5 कहाँ पे है यहाँ पे? 140 vertices, each vertex have x y z। इतना तो मैं समझ गई, इसमें x y z मतलब कि ये हुआ x, ये हुआ -x, और ये हुआ -x, ये हुआ x, और ये हुआ y, ये हुआ -y। each vertex have x y z position, x y z position। vertex connect to make faces, vertices connect to make faces, I know, but they connect to make water surface। Visual your water grid, imagine a rectangle with 70 dots। Visual your water grid, imagine a rectangle with 70 dots along the top edge and 70 dots। मतलब मैं सही समझ रही थी, यहाँ पे 70 dots होंगे, मतलब उसमें 70 dots। मतलब मान लो यहाँ पे हम लोग वाटर बनाते हैं, यहाँ पे एसिड, एसिड, हाँ यहाँ पे हम लोग अगर एसिड वाटर बनाते हैं तो यहाँ पे 70 वर्टेक्स मान लो।
70, लेकिन मैं 70 नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे मैं बड़ा नंबर लूंगी, लेकिन सब कुछ बन जाने के बाद हम लोग नंबर्स को चेंज करेंगे. So imagine a rectangle with 70 dots along the top edge and 70 dots along the bottom edge. Okay, I got it. Here are this vertex with the top and bottom. अगर इसमें सिर्फ ऊपर के रॉस को y एक्सिस में इसने इतने रॉस लिए, मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स x वर्टेक्स, हाँ तो यहाँ पे ही होगा ना, तो x सही लिया, सही लिया दूर. और उसमें टॉप, मतलब यहाँ से एक वेव उठेगी और यहाँ से एक वेव उठेगी. मुझे थोड़ा y को समझना पड़ेगा. एक्स वर्टेक्स हो गया, एक्स वर्टेक्स मतलब एक्स पोजीशन पे एक उसने डॉट्स बना दिए, और फिर यहाँ पे रॉ के सेकंड वाई पोजीशन पे उसने डॉट्स बना दिए, मतलब ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे. इन द एरे इंडेक्स बॉटम रॉ डॉट्स, टॉप रॉ डॉट्स. सो यस 70% रॉ on bottom, मतलब सिर्फ y axis पे बनाए. 30 on bottom, lower y, 70% of higher y, and like that. Just more of idea. Just points or that connect with each other. We need to make timer to connect. After that, what video will for waves inside. Step 1, we have point vertex, मतलब यहाँ पे हमने point vertex बना दिया, फिर कनेक्ट them with triangle. जब उसने triangle यहाँ पे देखा, यहाँ पे अब ये triangle को लिखना है, तो triangle को लिखने के बाद फिर वो vertex बनाएगा उसका. Connect with the triangle, visual surface, move top points up and down waves. Okay. In one sentence, point first, triangle first. Okay. तो इतना तो हमने समझ लिया. What is this doing? एक लाइन कोड मैंने समझ लिया. पहले ये भी थोड़ा समझ लो. Each point we can yes, correct. In short, mesh create an empty shape. When you add vertex, triangle, so you keep making new shapes. Mesh no, not for each one. Correct understanding. You mesh create one empty mesh. एक empty mesh create करता है, then you add all vertices into the same one mesh. Oh. एक mesh create करता है, मतलब यहाँ पे मान लो एक विजुअल, मतलब एक mesh बन जाता है यहाँ पे, इसमें हम सारे पॉइंट्स को शेयर करते हैं. Mesh. Yes, or triangle, anything. Everything is not like this. Okay. तो इतना तो समझ में आ गया. मतलब कीप गोइंग करेंगे, मतलब जाते जाएंगे. Here we creating a mesh to store or
to use and store, to use mesh and put all vertices and whatever we create with that vertices to store inside this mesh. One mesh in one object. We can say one mesh. We can say one mesh. One mesh in one object. Right. Okay. All whatever we make for we make with those vertices. Exactly, one mesh, one object. That object holds all vertices, triangle, UVs, normal, etc. Okay. So यहाँ पे हमने समझ लिया. Here we put it. I know my English is no English, but I use put it instead of put because put it से मुझे समझ में आता है कि हाँ ऐसे मैंने किया हुआ है. माना इंग्लिश गलत है but मैं जैसे समझ लूँ भाई. Here we put it all vertices position in array of vector. All vertices position of top and bottom row and bottom row, top and bottom row, vertices position of top and bottom row in array of vector to get position, to store and get position. और यहाँ पे ये टॉप वर्टेक्स इंडेक्स क्या है? इंट टू हेडर और टॉप वर्टेक्सेस में पॉइंट ऑफ वेव, मतलब यहाँ पे 70 ऑफ वेव्स, मतलब ये टॉप के लिए बना दिया है जहाँ पे हमें वेव्स बनाना है. नहीं समझ में आया कि क्यों उसने किया, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच लाइन कि क्या क्या है यहाँ पे. I don't need to understand everything. When I will keep going, everything will work, you know. I just don't need to pressure myself. Here he saved top row vertices to use to make waves, right? Because we need waves on top row, not on the second. And here we made array to store all vertices of top row. But why we first stored position of all top and bottom row. Now just for top. Yes, you are exactly right. Short answer. He stored all vertices, top and bottom, in vertices because you need both row and rows to make the mesh. Yes, इतना तो पता है. Oh, तो सबसे पहले उसने mesh के points बनाए.
he stored only top vertices in top vertex index because waves only move the top rows. तो फर्स्टली इसने क्या किया, मतलब ये स्टोरी की तरह है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है जो वो ट्रायंगल में बनाएगा। बट अभी हम लोग सीख लेते हैं कि पहले उसने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। फिर बॉक्स बनाने के बाद विजुअल हो गया, विजुअल दूंगी तो मैं भी समझ ही जाऊंगी। वेट लेट मी गिव यू विजुअल, विजुअल मेरे पास है उसका। सो मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना समझाते टाइम मैं खुद समझती हूँ, मतलब समझाने में काफी इजी हो जाता है, यू नो। और ये चीज मैं फक यू नो डूड क्रिएट, आई डोंट वांट टू मेक एनिमेशन, सो लेट्स गो ऑन पेंट। ये क्या हो गया, ब्लैक लेते हैं ताकि मैं भी समझ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये अर्पित वाला कैसे बोलता है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई ये क्या हो गया, मैं भूल गई हूँ यार, ये छोटा कैसे करते हैं ये। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मान लो ये हो गया टॉप। एक तो ये पेन कितना गंदा है, पेन कितना गंदा है, ये पेन कितना गंदा है। सो बेसिकली यहाँ पे मान लो ये हो गया टॉप, टॉप रॉ, ठीक है। ये मैं अभी विजुअल उसे दूंगी। इसमें हो गया 70 वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार ये क्या हो गया, इसे हटाते हैं, इसे देते हैं ऐसे, एक पॉइंट करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10। यहाँ पे टॉप, और यहाँ पे बॉटम मान लो, बॉटम, बॉटम यहाँ पे मान के चलते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वही वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तरह से तो ये तो y है, लेकिन यहाँ पे हम लोग x मानेंगे इस चीज को, और इसको भी x मानेंगे। x पे पोजीशन, x पे 70, यहाँ पे ये हो गया 70, और यहाँ पे हो गया 70, और ये हो गया y एक्सेस, और ये हो गया माइनस y एक्सेस। तो इसमें क्या हो गया कि हमने अभी से यू नो यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया, इस चीज को ऐसे बॉक्स बना लिया। और बॉक्स कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे, और ये ट्रायंगल में बनाएगा। लेकिन मैं अभी विजुअल दिखा रही हूँ कि उसने किया क्या, कि सबसे पहले इसने यू नो ये कर लिया, इसने सबसे एकदम स्टोरी की तरह है। अब मुझे दिमाग में आया कि हमें स्टोरी की तरह करना है, कि सबसे पहले पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स के ऊपर यू नो उसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट के बाद वेव्स लेने हैं। सबसे पहले अगर वर्टेक्स ले रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है, वर्टेक्स के बाद उसने टॉप रॉ लिए, तो वर्टेक्स उसने इसे मान लो ट्रायंगल में ये पूरे वर्टेक्स को ऐड करेगा इस तरह, और उसके बाद ऐड करने के बाद ये हो गया y, और ये हो गया माइनस y, ये y, ये x एक्सेस, ये माइनस x एक्सेस, माइनस x एक्सेस। तो समझ में तो आ रहा है। तो सबसे पहले ने वर्टेक्स बनाया, मतलब मान लो वो ट्रायंगल में इस चीज को जोड़ देगा, लेकिन अभी जोड़ा नहीं है, बट इमेजिन करते हैं ये करेगा। फिर उसने एक्स मतलब कि वाई एक्सेस, यहाँ पे क्या है वाई रोज को, कहाँ गया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे उसने वाई, पहले तो उसने एक बॉक्स बना लिया। फिर बॉक्स बनाने के बाद वो क्या कहते हैं, वो टॉप रो में जो 70 वेव्स के लिए 70 जो वर्टेक्स बनाया था उसने उसे स्टोर कर लिया, क्योंकि उसमें 70 टॉप रॉस में उसने वेव्स बनाने हैं। तो पहले उसने बॉक्स बनाया, फिर टॉप एक्सेस को उसने वेव्स के लिए सेव कर लिया अलग से, क्योंकि उसमें टॉप रॉ में ही हमें वेव्स बनाने हैं। तो बेसिकली यही हो रहा है कि पहले वो ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे इसने हमने पॉइंट्स बना लिए, पॉइंट्स बाद ऊपर अब मान लो बॉक्स बना लेंगे ट्रायंगल में, फिर ऊपर में हम लोग वेव्स बनाएंगे, जिसकी वजह से उसने अलग से सेव किया। अब मैं इस चीज को स्क्रीनशॉट लेती हूँ, यहाँ पे जाएगा top, because waves only move the top row by all one format top bottom need both to draw the full mesh,
We'll need to find them quickly and move them up and down. Up and down. This for everything. So we just for top row to make waves. So basically it's like a story that first you make box, then take top row to make waves. Like see the way to understand. It's so in sequence, right? Like he did not connected yet, but he is preparing like the story. It's perfect analogy. It is exactly like a story. What happened? Create empty mesh the book. मतलब उसने empty mesh बनाया ताकि सारे vertices, सारे triangle and सारे waves उसी में shave हो जाएं. Add all vertices, all character in the story. Yes. Store top row separately. Make the heroes who will move. Yeah. Then later connect with triangle. Make the scene. Then later move the top row. So basically इसमें उसने बॉक्स बनाया, फिर वहां ऊपर के टॉप को लिया ताकि वो वेव्स बना सके. अब इस चीज को समझेंगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी. फिर मूव टॉप रो अप एंड डाउन. हीरो स्टार्ट एक्टिंग. ही इज प्रिपेयरिंग, नॉट डूइंग एवरीथिंग एट वंस. He is preparing, not doing everything at once. So he is not doing everything at once. So all this movement set up vertices will make triangle. Store top row will top move row for waves. So स्टोरी अभी वो वर्टेक्स को सेव कर लिया उसने. फिर सेविंग टॉप रॉ ताकि वो कहे कि वो बॉक्स बनाए. फिर बॉक्स बनाने के बाद वो जो उसने सेव किया है उस चीज को यहाँ पे क्या किया है, to create list just top row to make waves. List of everything one separately just to top row to make waves. Move and store it separately. Bottom row never moves. हाँ, so उसने bottom row को save ही नहीं किया. So now need to store it separately. Okay, to find them quickly. और top vertices इस चीज को पहले save किया, then quickly and move up and down. So लिखते हैं now we store the top rows vertices separately to make waves. Story first story both law and modern human triangle. Now this story rows vertices separately we make waves. Gotcha. Okay. सेव कर लिया. इस चीज को ट्रायंगल में यूज करेगा. Okay. Now I got a gotcha. Setting up vertices will make triangle. Storing top row will make top row waves. Your visual thing is working. You are not just reading a book, you are seeing the sequence like a story. That's how you remember things. If I forget यार, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं फॉक्स भूल गए तो. Forward. By the way, I am reading to understand. We should do
comment art for your future selves. When you come back after 1 week or 1 month, you won't remember why you wrote something. But like, don't tell you, oh, this is where I talk about things for waves. What you should write, all will top and bottom row. To build mesh, only top row vertex है. This will move up and down for waves. ये भी मैं कर लेती हूँ भाई. Vertices, add vertices. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ position. ऐसे चिपका देते हैं. Vertical top and bottom to build mesh. Only top row vertex this will make proof. इसे कॉपी करते हैं. इसे यहाँ पे एक और कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि मैं जब पढ़ूँ ना मुझे नोट्स पे ना आए. चलो सही है. तो पहला तो हम लोग समझ गए कि उसने एक मैश बनाया जिसमें सारी चीजें स्टोर हो सके. फिर उसने पहले टॉप एंड बॉटम में एक वर्टिक्सेस बनाया. मतलब विजुअल मान लो कि उसने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए, वर्टेक्स बना दिए. वर्टेक्स के बाद टॉप रॉ उसने ले लिया ताकि उसमें वेव्स बना सके. तो सारी चीजें अभी वो स्टोर कर रहा है. ठीक है. राइट नाउ ही इज स्टोरिंग एवरीथिंग. एंड देन ये क्या किया उसने, फॉर. ठीक है. अब उसने लूप चलाएगा. इंट y 0. फिर y उसने y लिया एज इंडेक्स. इंडेक्स के लिए उसने 0 लिया. फिर y में उसने नंबर ऑफ y वर्टिक्सेस जो फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड रॉ है फर्स्ट प्लस कर दिया. फिर उसने अच्छा 70 पॉइंट्स बना लिए उसने वर्टिक्सेस. अभी उसने बनाया नहीं है, मतलब कि ये जो उसने स्टोर किया है फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड रॉ को उसने जो स्टोर किया है पॉइंट्स को अभी उसने स्टोर किया है. वो बनाएगा. अब वो पॉइंट्स को बनाएगा इसमें. ऐसे जो ये है ये इस चीज पॉइंट्स को बनाएगा. अभी ट्रायंगल नहीं बनाया. वो ट्रायंगल में वो जो अभी करेगा जो हम लोग लिखेंगे उसमें बनाएगा. लेकिन अभी वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा. अभी से पॉइंट्स को लूप के थ्रू बनाएगा. तो पहला उसने यहाँ पे नंबर ऑफ y वर्टिक्सेस y प्लस कर दिया कि मतलब अब नंबर ऑफ वर्टिक्सेस हमने कितने लिए थे, वर्टिक्सेस हमने 2 लिए थे. तो यहाँ पे 2 हो गया. जब हम लोग ये सब कुछ कर लेंगे ना तो मैं इस चीज को चेंज करके देखूंगी. 1 और 2 रॉस है तो ये 2 रॉस तक लूप करेगा. ये नेस्टेड लूप बनाया तो मान लो एक लूप में गया मतलब टॉप लूप पे टॉप रॉ पे गया. फिर दूसरा हमने चलाया जिसमें हमने इंडेक्स लिया x एस वेरिएबल स्टोर करने के लिए पहले इंडेक्स को और नंबर ऑफ वर्टेक्स. तो बेसिकली ये एक रॉ में उसने नंबर ऑफ वर्टेक्स से 70 को ऐड कर दिया. तो उसने कैसे किया, फ्लोट x पोजीशन में उसने x. ठीक है. अब समझना है. ठीक है. अब धीरे धीरे चीजें क्लिक हो रही है मेरे को. फ्लोट x पोजीशन इसने फ्लॉट किया x फ्लॉट नंबर ऑफ वर्टिक्सेस -1 नंबर ऑफ मतलब ये लास्ट से होकर एक विड्थ उसने ले लिया था. विड्थ 10 लिया था. 10 विड्थ है. 10 उसने नंबर ऑफ वर्टिक्सेस मतलब 70 10 700 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2. मुझे अब इस चीज को समझना होगा क्योंकि माई मैथ इज नो मैथ. और चलो ये दो तो ठीक है अभी समझते हैं. फिर y जो वर्टेक्सेस है मतलब जो पोजीशन है जो हमने वेक्टर 3 लिया था उस वेक्टर 3 में तो सारे वर्टेक्सेस सेव हो गए. पूरा बंद कर दिया वर्टेक्सेस पूरा बंद कर दो मम्मी. वर्टेक्सेस y इंटू y मतलब कि ऊपर का जो रॉ है पहला रॉ में वर्टेक्सेस ऐड हो गए प्लस y. ये कौन सा y है, y x y इंडेक्स 1 मतलब x इंडेक्स है उसमें डिवाइड क्या किया. इतना बाप रे इतना खतरनाक मैथ. ओके मैं कर लूंगी. इतना समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा. नॉट अ बिग डील. नॉट अ बिग डील. वी सेट दैट
अब समझ में आ रहा है मेरे को। अच्छा हुआ कमेंट मैंने सब चीज में लिखा, वरना मैं तो दिमाग से ही निकल जाता वही। कि मेरा ना, अरे ये ना क्या कहते हैं, ये मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ यार, मैं बहुत थक गई। कब से कर रही हूँ भाई, 41 मिनट से कर रही हूँ। व्हाट अ बिग डील। हाँ, गेट बंद कर देना, गेट बंद कर दो भी। इसे हटाते हैं, यहाँ पे करते हैं। मैं देखती हूँ मैं लाइफ सही चल रहा है कि माई, इज माई लाइफ गोइंग राइट। गेट बंद कर दूंगी। राइट राइट राइट, यहाँ पे करते हैं। मैं देखती हूँ टेक्सास ऑल कैरेक्टर इन द स्टोरी, यस। Top row separately make the heroes who will move, yeah. Then index की उसने 0 लिया, सारे वर्टेक्स से सेव हो गए पूरा। we can say whatever आज पढ़ने में मजा आ रहा है। लाइक मैंने पहले डिसाइड किया था कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले यूनिटी ही खोलूंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा दिन के बाद यूनिटी खोलूंगी तो मेरा दिमाग खराब रहेगा। नाउ माई माइंड इज फीलिंग लाइट। अब मैं इतना ही समझूंगी, फिर ट्रायंगल वाला कोड लिखेंगे और इस चीज को हम लोग कल समझेंगे। लेकिन इससे पहले इससे पहले गेट बंद कर देना पूरा पूरा यार। हाँ, तो सबसे पहले हम, इसके बाद हम लोग लाइव बंद नहीं कर रही मैं, क्योंकि आज मेरा काफी बड़ा प्लान है कि मैं ज्यादा देर तक रहूंगी। अभी तो मुझे रोब्लॉक्स भी सीखना है, लेकिन वो मैं कोचिंग के आने के बाद रोब्लॉक्स पे थोड़ा और ट्यूटोरियल्स देखूंगी, फिर उसका लाइव करना है, क्योंकि मैं जो भी रोब्लॉक्स पे सीख रही हूँ उस चीज को मुझे लाइव दिखाना है। और भी वीडियोस है, लाइव को एडिट करना है ताकि मैं वीडियो बना के पोस्ट कर सकूं। तो बहुत चीजें लाइक ओके। इसके बाद हम लोग लाइट बनाएंगे। चलो एटलीस्ट मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, मैंने गिव अप नहीं किया। पता नहीं ये पैटर्न रिकॉग्निशन मुझे कब उतना समझ में आएगा। लाइक मेरा पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत काफी ज्यादा अच्छा है वैसे, बट नई नई चीजें सीखती हूँ फिर दिमाग से निकल जाता है कि पैटर्न रिकॉग्निशन एंड सीक्वेंस वाइज हमें स्टोरी वाइज जाना है कि हमें पहले क्या चाहिए फिर उसके बाद क्या चाहिए। आई थिंक ये चीजें मुझे ढेर सारे छोटे मोटे गेम्स बनाने के बाद ही आएगा, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में 2 कॉपी गेम्स मैंने यूट्यूब से कॉपी करके बनाए थे, और एक गेम मैंने जो मोदी वाला था वो मैंने खुद से बनाया था बिना देखे। और ये वाला मेरा दूसरा गेम है जो मैं बिना देखे बना रही हूँ, हेल्प लेकर, मतलब कि एआई से हेल्प लेकर के बना रही हूँ। एआई से कोड नहीं मांग रही, अपने डाउट्स को क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि खुद नहीं आएगा तो मैं फ्यूचर में एआई को यूज कैसे करूंगी। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा बेसिक, like you don't need to know everything about code, you just need to know basic of the code. Any programming language you are working on, you want to work on, you just need to basic of that language. And if you know the basic and how things work, and not only code with scripting, if you know the scripting and basic of code, then you can use AI very properly and you can make so many things just by knowing the basic. So you don't need to be so advanced in the coding, you just need to know basic. So but I want to know advance of the coding too, because I don't only want to make projects, I want to get a job. So for job I want to learn advance, and I also want to feel worth of doing something. Like I just want to feel that I can do something, so I can be confident no matter AI can make everything. Okay, in future AI gonna do everything, but it's not mean that we are gonna stop. So after learning C#, C++, Unity with Unreal Engine, then I will move to
to AI machining because I need to learn that because you know the game gonna be so advanced in future. Like जब मैंने ना सोचा कि AI एंड मशीन लर्निंग लर्न करने से कितना सब कुछ हो सकता है, AI मतलब यू नो गेम का पूरा फ्यूचर ही बदलने वाला है. लाइक सीरियसली लाइक मतलब AI के हिसाब से सारे हर एक मतलब एक गेम होगा और उसे ऐसा बनाया जाएगा कि हर एक इंसान के फोन में अलग अलग तरह से चीजें बदलेंगी. लाइक कितना ज्यादा अच्छा होगा. लाइक बनाने में ही मजा आ जाएगा. हर एक चीजें पहले क्या होता था, हर एक चीजें सेम रहती थी हर एक चीजें में, या फिर रैंडम बनाने की वजह से जब भी हम गेम खोलते थे अलग अलग चीजें आती थी. लेकिन AI यूज करने के बाद पूरा चीज ही बदल जाएगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. लाइक 2026 तक तो शुरू ही हो गया है, बट देखते हैं मैं कब तक पहुंचती हूँ. I just have to be consistent with my work, whatever I am doing. So अब इतना रेस्ट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं. So यहाँ पे क्या था, इतना तो समझ में आ गया कि पहले रो में जाना है. फिर पहले मुझे तो इसने क्या किया सबसे पहले कि सबसे पहले उसने सारे पॉइंट्स मतलब टॉप एंड रॉ ये पॉइंट्स को उसने सेव कर लिया. फिर सेव करने के बाद उसने टॉप रॉ को भी सेव कर लिया ताकि वो वेव्स बना सके. अब ये इस चीज को यूज कर रहा है मतलब वर्टेक्सेस, जिसमें उसने टॉप रॉ एंड बॉटम रॉ के पॉइंट्स को सेव किया था मतलब 77 में 140 वर्टेक्सेस को. तो अब वो पहले लूप को चला रहा है ताकि वो टॉप रॉ में मतलब कि टॉप रॉ में वो 70 पॉइंट्स को बना सके. मतलब यहाँ पे जो टॉप रॉ है वो लूप चला रहा है सारे सबसे पहले तो उसने सारे रॉ एंड बॉटम के जो वर्टेक्सेस है उसने सेव कर लिया. अब वो सेव करने के बाद लूप चला रहा है ताकि इस तरह का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन यू नो यूनिटी में शो कर सके. तो सबसे पहले ये पहले रॉ में जाएगा. पहले रॉ में ये 70 पॉइंट्स बनाएगा. मान लो सो ऑन 70 नहीं है बट जस्ट इमेजिन देयर इज 70 पॉइंट्स टू मेक अ वाटर. मैं तुम लोग को नहीं समझा रही, मैं खुद समझ रही हूँ. दिस इज द बेस्ट वे टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड. बिकॉज अगर कोई बहुत ही यू नो मान लो मेरा लाइव कोई यू नो बहुत ही बड़े लोग देख रहे हो मतलब बिग डेवलपर्स देख रहे हो तो वो भी क्या ही बोले, बट अगर वो मुझे देख रहे हो तो they will understand the struggle of these things. Like वो बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे तो they are not gonna judge. नंबर ऑफ 5 वर्टेक्स है तो वो पहले रॉ में जाएगा. पहले रॉ को बनाने के लिए इसमें 70 पॉइंट्स बनाएगा. लेकिन अब मुझे इससे मैथ समझना पड़ेगा. The math is I hate math. Seriously I hate math. तो ये टॉप रॉ में गया मतलब ये यहाँ पे y एक्सिस पे गया, y पे गया. अब ये x ले रहा है ताकि यहाँ पे 70 बन सके क्योंकि वेव्स ऐसे उठेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेफ्ट एंड राइट मतलब x एक्सिस और y तो टॉप ही ले रहे हैं. टॉप बॉटम या y बॉटम क्या फर्क पड़ता है उतना. कहाँ गया सो ठीक है. यहाँ पे y एक्सिस पे गया जहाँ पे 70 पॉइंट्स बना रहे. अब यहाँ देखो यहाँ पे नम ऑफ y वर्टेक्स मतलब टॉप रॉ को लिया और टॉप रॉ में हमने 70 पॉइंट्स को जोड़ा. अब वो जोड़ा कैसे, अब जिसको मुझे समझना पड़ेगा. ब्रो प्लॉट y पोजीशन व्हाट दिस इज डूइंग यार. नाउ आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन. एक समझ लिए तो सब तो समझ में आ जाएगा. मुझे कुछ खाना भी नहीं खाया है. जस्ट केम हियर. प्लॉट dude I am going to give you window and that loop is to make visual representation of those vertices raw by raw. First we saved those vertices. Now we are making points of that vertices visually. I gotcha. But now see.
You have to tell me line of code and point price point what I ask. Not everything. First say this and tell me, am I right? First is user points now on top and you're using but see. But now tell me just this line of code what you are not getting the math. Y x float then minus 1 let's into with then red then divide by the 1 o'clock is this. You are right to be confused. That line looks insane. What this line does, it make a point number x and turn it into a screen position x coordinate. Remember, like x first position, left edge 70, last point right edge मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक. अच्छा ठीक है. Takes with this, what this line does, it make a point number x and turn it into a screen position y coordinate, turn into a screen position x coordinate, not y, x coordinate, turn into a screen position x coordinate. Example, if x is 0, first point x left edge, मतलब वो left edge में जाएगा. फिर if x 70, then last point मतलब right edge में जाएगा, मतलब edge बना रहा है, मतलब line बना रहा है. Everything is between evenly spread. अच्छा, evenly spread मतलब कि वो पहले यहाँ से इस पॉइंट को लिया 0 से और ये यहाँ तक जा रहा है पूरा 70 तक, मतलब इस चीज को भी प्रिपेयर कर रहा है. यहाँ तक लाइन बनेगा, फिर ट्रायंगल में वो लाइन बनाएगा. ओके, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने पॉइंट बनाया. यहाँ पे लेफ्ट मतलब राइट में उसने एक पॉइंट बनाया और उस पॉइंट मतलब वर्टेक्स बनाया. फिर वर्टेक्स को उसने लास्ट तक 70 तक ले गया, तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स बन गए. ओके, गॉचा. फिर piece by piece, plot number of vertex minus 1, number of vertex 70, number of vertex minus 69, because we start counting for 0 to 69. मुझे लग ही रहा था, मैंने पहले ही बोला था कि number of vertex minus 1 मतलब लास्ट से शुरू होगा, लेकिन समझ में नहीं आया कि कर क्या रहा है. अब समझ में आ रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे 0 पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक मैश बनाया जिसमें सारी चीजें सेव हो सके. फिर वर्टेक्स हमने सेव कर लिया, सारे वर्टेक्सेस को, टॉप रो और वाई रो को, सारे वर्टेक्सेस पॉइंट्स को हमने सेव कर लिया, टॉप एंड बॉटम को. और फिर हमने पहले वर्टेक्स को सेव कर लिया, इसका भी काम नहीं है. टॉप वर्टेक्स को सेव कर लिया ताकि हम वेव्स बना सके, इसका कोई काम नहीं है वैसे अभी. सेव किया ताकि हम लाइन बनाने, वेव्स बनाने की यूज करें. अब हमने लूप यूज किया ताकि ये जो वर्टेक्स है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम
अब इस वर्टेक्स को हम यूज कर सके पॉइंट्स ऐसे ऐसा बनाने के लिए। अब इस चीज लाइन को भूल जाओ, बस इस पॉइंट्स विधान को इस पॉइंट्स को हम विजुअली बना सकें। बनाने के बाद हमने पहले रो को लिया, इस पहले रो में हम गए, इस पहले रो को अब हमने क्या किया, इस पहले रो में y एक्सिस की साइड, मतलब इस पहले रो में y एक्सिस की साइड, पहले रो में गए फिर y एक्सिस की साइड हम क्या x पोजीशन लिया फ्लोट, फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स -1, मतलब यहाँ से x शुरू होगा फिर यहाँ से पॉइंट बनते जाएगा फिर ये लास्ट एज तक पहुंचेगा। Gotcha dude. Wait, okay, 09. Why? Because if you have 70 points, there are 69 gaps between them. Gotcha. Number of vertices -1. Plot. X 69. Float. There's a float क्यों लिखा? I mean, I didn't get. Float. Number of x. X minus x divided by 69. इतना ज्यादा मैथ है ना कि दिमाग में नहीं आ रहा। Float number of vertices -1. Now x इतना 69, x 0 0 69। अच्छा तो ये x इंडेक्स है, फिर इंडेक्स को इसने -19 कर दिया ताकि लास्ट से पॉइंट शुरू होके बन सके, मतलब लास्ट से पॉइंट विजुअली बन सके। 0 इंडेक्स इतना 1, मतलब इससे इंटू कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, इंडेक्स से डिवाइड कर रहा है, फिर 69 0 रिजल्ट, मतलब 69 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 69 ही आएगा ना, आई डोंट नो। अच्छा हाँ 61 बीच में है ओके इतना 1। See first point 0, last point 1. Point is between a fraction. अच्छा ये सब fraction है, 0 में आ रहा है। See first point 0, last point 1. Point in between are fractions. Then piece 1 width minus into width. Width 10 है, from edge left -5. यहाँ पे 10f है bro, 10f। हाँ 10 into width 10 है, from left edge minus अच्छा वेट into width, मतलब width हमारे पास 10 है तो from left -5 होगा क्योंकि वो left है, फिर edge +5 होगा। जैसे हम कोऑर्डिनेट में देखते हैं कि x लेफ्ट होता है वो माइनस होता है, राइट होता है वो प्लस होता है, तो -5 +5 multiply each fraction by 10। each fraction मतलब ये जो fraction आया था each by 10, तो 0 हमने लिया, मतलब ये दोनों हमने क्या किया, x को जो इंडेक्स था उससे हमने मतलब जो y था, y यहाँ पे क्या है, y हमारा वर्टेक्स है, मतलब वर्टेक्स हमारे पास 70 है तो ये 70 बार लूप करेगा। तो पहला x क्या है हमारा, 1 वर्टेक्स है, उस 1 वर्टेक्स को हमने पहले वर्टेक्स से कि क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ तो 1 वर्टेक्स सही थी मैं, तो ये जो y है जो x है ये एक तरह से इंडेक्स है और 70 वर्टेक्स हम इंडेक्स मान लेंगे, और पहला इंडेक्स को हमने लिया फिर माइनस किया तो वो 69 हुआ, तो 69 से हमने पहले इंडेक्स को हमने जब डिवाइड किया और उस डिवाइड करने के बाद फिर 10 से हमने इंटू किया तो वो 0 आया, हाँ ठीक है, फिर 0.14 फिर इतना 10। ओके नाउ पॉइंट स्प्रेड फ्रॉम 0 to 10, मतलब 0 से शुरू हुआ फिर वहां पे 10 तक बच गया, ठीक है, फिर माइनस विद डिवाइड, मतलब 10 को माइनस विद इंटू हुआ, फिर इंटू के बाद जो भी आंसर है मतलब कि 0 से फिर से 10 है, ओके -10 माइनस विद मतलब 2 विद, फिर बोर्ड मास बोर्ड डिवाइड आएगा तो ठीक है,
डिवाइड पहले आता है बोर्ड मास, बोर्ड डी से डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो 5 आया। और 5 को, चलो इतना तो मुझे समझ आ रहा है 5 को कैसे हमने किया, क्योंकि बोर्ड मास में डिवाइड पहले आता है, मास मास सब्सट्रैक्शन लास्ट में आता है, तो बोर्ड डी डिवाइड सबसे पहले होगा, तो विड्थ को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आया, फिर 0 5 -5, फिर हमने ये जो भी आंसर आया था -5, फिर -5, फिर प्लस राइट एच। अच्छा माइनस जाते 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 वो पहुंच गया, नाउ पॉइंट स्प्रेड टू, मतलब माइनस होगा पॉजिटिव, ऑल 4 स्टेप्स, 1 टोटल -1 0 to 1। ओके ये जो x है वो और नंबर ऑफ वर्टेक्स -1 ये ले जाता है हमें लेफ्ट से राइट। ओके फिर विद 0 to 10, विद और विद इंटू 2 हमें इसमें इवनली स्प्रेड कर देता है, और ये जो विद और विद इन डिवाइडेड बाय 2 है वो इवनली वर्टेक्स को स्प्रेड करने के लिए। ओके it's simple, take points number x, stretches across the full width and set it to 0. Pointer stretches without the full width. So basically, see, this is, see, यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। This is first telling that start from left to end right, मतलब 1 x1 to right, telling the vertices, then this one is spreading and spreading those vertices evenly. Yes, exactly right, you got it. Your own words. X total -1, the total vertex of number of vertex. Identify point position from left 0 to right 1. Identify positions points 0 to right 1, मतलब उसने पहले यहाँ पे गया, उसने यहाँ से आइडेंटिफाई किया कि हमें 0 तक जाना है, फिर यहाँ तक जाना है, यहाँ तक से कर दिया, माइनस कर दिया कि एक एक करके जाना है हमें लास्ट से, शुरुआत से, मतलब लास्ट तक पहुंचना है। पहला लिया लास्ट से गया 69 70 71 ऐसे, फिर हमने स्प्रेड पॉइंट इवनली एंड सेटल्ड है विद the first part 0 to 1, second part stretch and center. तो ये y क्या है फिर, y फ्लॉट नंबर ऑफ वर्टेक्स, मतलब 1 and 2। अच्छा हाइट को कर रहा है यहाँ पे, विड्थ और हाइट का भी तो समझ में आ गया, वर्टेक्स मतलब 1 और मतलब कि पहला क्या हुआ कि हमने 1 को लो, फिर 2 को लो, और फिर उसके हाइट के हिसाब से उसे स्ट्रेच कर दो यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्ट्रेच कर दो, लेकिन अभी स्ट्रेच नहीं हुआ है, अभी से पॉइंट बनाया जा रहा है। हाइट कितनी थी, हाइट यहाँ पे हमारे पास कितनी थी भाई, हाइट 4 थी, 4 फ्लोट, मतलब कि 1 to 2 से 1 तक गया है, 1 से 0 तक गया, 1 से 0, फिर उसमें इंटू हुआ हाइट 10 थी, फिर माइनस हाइट हमारे 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 माइनस हाइट
ओके, अब ये सब मैं करने जाऊंगी तो भी समझ में आएगा, इतना समझ में कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। परफेक्टली ना मूव टू नेक्स्ट। अरे बाप रे मेरा पेट। सो यहाँ पे अभी ट्रायंगल नहीं बनाया जा रहा, अभी सिर्फ पॉइंट को लोकेट किया जा रहा है। Here we are locating vertices evenly from left to right on raw and bottom raw and bottom side using the here we are doing the same things, locating again points points on points for height on row and bottom okay, position my height vertices plus x vertices से यहाँ पे y के पोजीशन को ले लिया, मतलब हमने जो भी पोजीशन, ये पोजीशन क्यों है क्योंकि हमने y को जो पॉइंट्स है मतलब x रॉ, पहले रॉ का और दूसरे बॉटम का लूप के थ्रू तो बन ही जाएगा 70 वर्टेक्सेस रॉ में और बॉटम में, तो उसके पोजीशन को हमने यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, पोजीशन को x का पोजीशन मतलब कि x का इसका पोजीशन उसमें सेव हो गया और इसका जो पोजीशन है मतलब सॉरी इसके जो पॉइंट का पोजीशन है और इसके पॉइंट का पोजीशन है वो x में हो गया और ये y में हो गया। सेविंग द पोजीशन, ये क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट अभी लिखते हैं यूजिंग लूप टू लोकेट द using locator width and height with vertices position. Using loop to locate the width and height of the vertex of the water using just vertices and point.
vertices. The triangles are used by the mesh renderer to create a bunch of quads, and each quad is made up of two triangles. We need to construct triangles out of those vertices. The triangles are used by the mesh renderer to create a bunch of quads. And each quad is made up of two triangles, so we just specify which out of those vertices. The triangles are used by the mesh renderer to create a bunch of quads.
and each quad is made up of 2 triangles. So we just specify which vertices those 2 triangles are made from. Until we've gone through all of our vertices. And this next part is extremely important if you want to do any shader work or even be able to apply a texture to your mesh. We have to assign the UVs. The UVs are... This next part is extremely important if you want to do any shader work or even be able to apply a texture to your mesh. We have to assign the... And this next part is extremely important if you want to do any shader work or even be able to apply a texture to your mesh. We have to assign the UVs. The UVs are stored in an array of vector 2s, and we'll set them based on the position of each vertex, while also taking our height and width into account to ensure it's always sized properly. And since I want to call this from within the editor, let's get the mesh renderer and mesh filter components right here. And we'll set them based on the position of each vertex, while also taking our height and width into account to ensure it's always sized properly. And since I want to call this from within the editor, let's get the mesh renderer and mesh filter components right here. And assign the material while we're at it. Then we'll assign our vertices and our triangles and our UVs. And you may or may not need this. I don't for this project, but since we only call this once, we may as well recalculate the normals and bounds in case you want to do anything with those in the future. And finally, we'll set the mesh filters mesh to be this mesh. Now you can go ahead and call this in the start function. And you could add this to a game object and set the height and width, and it should work just fine. But I wanted to make this a little bit nicer to work with, which means a custom editor script to get a few buttons and handles working. I'm not going to spend too much time on this because it's not really important for this tutorial. It's just some quality of life stuff.
and are used in the future. And finally, we'll set the mesh filters mesh to be this mesh.
Now you can go ahead and call this in the start function, and you could add this to a game object and set the height and width, and it should work just fine. But I wanted to make this a little bit nicer to work with, which means a custom editor script to get a few buttons and handles working. I'm not going to spend too much time on this because it's not really important for this tutorial, it's just some quality of life stuff. But we will need to add these 3 namespaces first. In Albion, no matter where you go or what you do, your mount will accompany you on your journey. Perhaps you'll pick the ox, a merchant's best friend. It can And for this tutorial, I'm just going to add a separate class down here, quality of life.
vertex while zero 060 हेलो, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब मैं 1 घंटे से जो बोल रही थी तुम लोग को सुना ही नहीं दिया। अब मैं इस ऐप को मैं डाउनलोड करने वाला हूँ, क्योंकि वो ऐप एक गू ऐप है, क्योंकि ये गू काम नहीं कर रहा। वो ऐप एब्सोल्युटली गू ऐप, क्योंकि मैंने इतने देर से अपने स्टैंडिंग को बोला, मतलब इतने देर से मैं चिल्ला रही थी कि मैं क्या समझी क्या समझ में आया, कुछ सुनाई ही नहीं दिया। ये वो ऐप एक गू ऐप है जिसे मैं सुन डिलीट करूंगी, आज ही डिलीट करूंगी। एक नया ऐप डाउनलोड करूंगी ऑडियो के लिए, क्योंकि मेरा फोन सपोर्ट ही नहीं करता ऑडियो, मतलब मेरा कंप्यूटर सपोर्ट ही नहीं करता ऑडियो, तो मुझे फोन से रिकॉर्ड करना पड़ता है। सच में गू ऐप है, वो ऐप। चलो, तो मुझे यहाँ पे लाइट्स ऐड करनी थी, क्योंकि मैंने क्या डिसाइड किया था कि थोड़ा मोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे वाटर में, क्योंकि बहुत कुछ समझना है इसमें यार। तभी देखो लोग वाटर को इतना ज्यादा इग्नोर क्यों करते हैं। मैंने इतने ढेर सारे गेम्स देखे जहाँ पे लोग वाटर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा दिमाग लेता है। तो ना यार बच्चा, तो ना मेक इट। चलो पहले हम बताते हैं पहले से। देखो फिर से तो काम कर रहे हैं ना। इस वो गू ऐप को मैं डिलीट करूंगी, सच में बहुत बेकार है। I could be anything 2 weeks later। चलो पहले हम बताते हैं पहले से। देखो फिर से तो काम कर रहे हैं ना। इस वो गू ऐप को मैं डिलीट करूंगी, सच में बहुत बेकार है। I could be anything 2 weeks later। But I have decided that I will keep making answer, keep working on acid water day by day with understanding. I will not force too much that I get क्या है brain rot. So after working on sometimes on water, I will after work on something else. So now I will keep working on acid water tomorrow. Now let's work on light in game. What do you think? So now when what do you think? Because ऐसे जब मैं AI से बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ I have someone to talk about, Seriously, that's how personal develop works. What you are doing? Why smart? Acid water a little each day. Brain learns in background. Okay. Acid water a little each day. Switch to something else when tired. Prevent burnout. Yes. Working on light next changes game feel completely. Light in 2D. Unity had 2D light with URP, Universal Render Pipeline. They can make dark lab room. Yes. Flickering इमरजेंसी लाइट. आई वॉन्ट दिस. मुझे फ्लिकरिंग लाइट्स चाहिए कि कहीं पे फ्लिकर करे. ग्लो इफेक्ट फॉर एसिड, वो तो मैं उसमें ऐड करूंगी. शैडोज,
But honest advice, before light make sure you have player movement solid, shooting working, मतलब ये सब चीजें पहले करनी पड़ेंगी. My own advice, before lights make sure you have player movement solid, shooting working, acid damage working. Simple version, light are polished, game mechanics come first. So my suggestion order, what to finish first: player shoot boxes, score count, acid damage player, then lights. If you just want to learn lights for fun, go ahead. So first I have to make character and make it work. Then let well, I had thought I will do that first. What will be best? What do you think? Because my 2.5 hours just went in to understand 5-6 lines of code, and I'm not feeling productive. You're feeling unproductive because you spent time understanding an advanced mesh code, something more than avoid completely. Most people, that's not unproductive deep learning, but your brain is tired. I'm just feeling unproductive at what I did today. Here's what I think is best for you right now. Stop mesh, stop net, stop acid water to what made you feel productive. The fast way to learn. Good again. Make your player box move. Already done. Already done नहीं है. Make it jump. Make a simple box enemy. Make a player shoot and destroy it. 20 minutes तो नहीं लगेंगे. Player को shoot और destroy करो. अभी तक तो character ही नहीं बनाया. I haven't made character. Dude, the player wants a ball to check background. See. And you are saying 20 main and then 10 main. These are for expert level, not me. It's gonna take days for me. Make your character work first, add shooting, kill box, then add light for fun, then come back to acid water over days, not hours. One last thing, 2.5 hours on 5 lines for advanced code is productive, but your brain needs a win. Give yourself a win, which you're right, I'm sorry. You forget you are still building the player, and I gave you expert guide. That was what? Sad truth. 21. What was just a test, the next step. Choose next step, make a real player character, not a ball, a character you control. Create a sprite box, person, whatever. Add body and credibility, write movement clip, you already have the phone ball. Test until first. What is for you? Take whatever long you need. Forget lights for me. तो पूछते हैं कि कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए मुझे. I want a box character who have 2 legs and two hands and gun in it, and I need
to make it jump and jump. I need to jump, shoot, all movements, movements, and eyes moving. What I need for that? 2D. How I do? Tell me what I need to do for that. It's a really fun character idea. A box with leg, hand, and gun, moving eyes. Let me break exactly what you need for each part. How to build your box character in 2D. You have two main approaches. Let me explain both because one is much easier to start with. Simple and fast. Recommended for starting. Everything in one piece. This is what most tutorials show. You draw your character as a single sprite, one picture. Important, attach your movement script. You draw your character as a simple sprite. You draw your character as a simple sprite. You draw your character as a single sprite, one picture draw करते हैं, imported HIO movement script. फिर what you need? Component, sprite render. Show your character image, box sprite 2D. For ground interaction and collision, rigid 2D. For physics, simple to set up, easy to code, movement jump, work immediately, limb work have immediately, harder to swap weapon. What the fuck? ये मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे movement चाहिए. Multiple pieces for the full experience you described. Body, leg, hand, gun as a sprite split. This is how many 2D games handle custom character. Each body part is a separate image. Okay. What you need? Component for each body parts, separate render with different order in layers, values, so hard and top layer on body. Part around body, like hand, gun, foreground. To make this work, you also need the 2D animation package, sprite skinning bones. Limbs are move independent. Can strap weapon looks more alive. More formula to set up, need extra unity package. Yeah, to make accident. Method, how it works, attach gun. Thing before you start, don't try to make all at once. Movement self, just why my purpose is 3D animation, so why I need much time to make 2D character. Any AI which can do this for me? In short, tell me. Yeah, definitely I tools for this, but here's the only problem. We spend days trying to understand complex mesh code for 2D water, but your real 3D animation. This is like learning to ride a bike to prepare for flying a plane. Wrong. Yes, AI tool can do a lot of work here actually. Well, generate 4 2D character, background, sprite, and plane. Studio where you have your code in English and you have to I don't need code.
I want to make it by myself. I just need character animation to make to use in my game. What the fuck you are listening? If honest, I want to learn and make it myself, and I sent you down a red hole to mesh water. Red was completely after that. I love the dad, you are not confused. Game part 4. You can have for that kind to just things. The last response. You didn't come here for a deep technical lecture on mesh math, AI philosophy. Generate exactly what you asked on a spreadsheet. Demo. पता नहीं क्या गंदा सा चूतिया सा बोल दिया। मैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं भी आई को समझाने में दिमाग नहीं खराब कर रही। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं जा रही हूँ, खाना खाऊंगी, फिर कुछ देर कुछ मूवी देखूंगी, फिर 3 बजे तैयार होना शुरू करूंगी और यहाँ से चले जाऊंगी। फिर रोब्लॉक्स आऊंगी तो कुछ रोब्लॉक्स करूंगी, फिर क्वेश्चंस लगाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। Just so tired. I'm not feeling productive. So chalo, thank you so much for watching. And okay, कल तो हम वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करने ही वाले हैं, क्योंकि अगर मुझे एनिमेशन मिल गया AI से तो हम तुरंत उसे ट्राई करेंगे, गन बनाएंगे, शूट करेंगे। क्योंकि एक कैरेक्टर मिल गया तो मान लो मैं उससे एनिमी भी बना दूंगी। I just need one character. Moving, jumping, and shooting. I just need these 3 characters. I think 3 movements. जो walking, idle मतलब खड़ा होना, फिर walking, jumping, and shooting. I need 4 of these. और die वाला अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कल से हम बनाएंगे। पहले वो चीज सारे बना करके हम लास्ट वाला समझेंगे, वाटर का, एसिड का। ये मेरा कल का टास्क होगा। That's it. मैं आज खोजूंगी, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कल हम खुद बनाएंगे। क्योंकि अगर पैसा लगा तो मेरे पास पैसे तो है नहीं मुझे खरीदने के लिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो तो बन ही जाएगा। यहाँ पे ढेर सारी AI टूल्स है जो बना देंगे, बहुत अच्छे से बना देंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने को, तो मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें या फिर तुम खुद बनाएंगे, आज मिल जाता है तो वो चीजें यूज करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो कल हम खुद वो 4 चीजें बनाएंगे। कल मैं जल्दी आऊंगी सुबह, ताकि जल्दी से चीजें हो जाए, ज्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि वो चीज बन जाएगा तो उसके बाद सारा चीजें तो हो ही गया। फिर मुझे सिर्फ गेम डिजाइन प्लान करना है कि चीजें कैसे क्या होंगी, और उसके बाद एनिमी तो उससे बन ही जाएगा, सिर्फ मुझे उसे रेड करना है, अलग अलग कलर्स के कर देने हैं। दैट्स इट। हाँ, तो आई नीड व्हाट? आइडल, वॉकिंग, जंपिंग, शूटिंग एंड डेड। 5 चीजें चाहिए। आइडल, वॉकिंग, जंपिंग, शूटिंग एंड डाई। ये 5 मूवमेंट्स मुझे मिल गए तो ये एनिमीज में भी लग जाएंगे, एनिमीज पे लग जाएंगे, तो काम आधा से ज्यादा खत्म ही। उसके बाद बस मुझे गेम डिजाइन करना है, प्लान करना है कि क्या क्या होगा, फिर मुझे टास्क बनाना है, उसके लिए टास्क पे काम करना है, तो ऑलमोस्ट ये फिनिश हो जाएंगी। उसके बाद आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो खुद बनाएंगे, खुद ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।